Assalamualaikum. Beta, in this video lecture I will deliver the lecture on Mendelian inheritance, the Mendelian disorders. For that you need to beta have some basic concepts. Starting with few terms. Number one is the genotype. And then halotype and the phenotype. These are very basic and the important terms. A genotype is referring to the entire genetic makeup of a human. Okay, so if let's suppose this is a homologous pair of chromosomes. Okay, this is one chromosome and this is another chromosome. This is homologous pair of chromosomes, and you know beta, there are how many? 23 pair of chromosomes. 23, 1 till 23 pair of homologous chromosomes. So beta, her locus पे, if let's suppose on this, but if let's suppose this is a homologous pair of chromosomes. Okay, these are the two chromosomes in a pair, and if let's suppose a gene is present on a particular locus, and on locus on the another chromosome. So the study of the genes present on the neighboring loci in all the 23 pair of the homologous chromosomes is the genotype. Okay, so what is genotype? It is kind of studying the both the alleles occupying the locus on the two homologous chromosomes. Okay, these are the two homologous chromosomes, studying both the alleles in all the 23 chromosomes. You can mention it here, in all the 23 pair of chromosomes, right? And halotype is referring to the set of alleles at two or more neighboring loci. Okay, studying the genes in not all the 23 pair of chromosome but in 2 or 3 loci. Okay, so it is like genotype is the complete book, it is the entire book, and halotype is one little chapter inside that book. Halotype is just one little chapter inside that book. Genotype is referring to the study of the genes on the both the loci in all 23 pair of homologous chromosomes. Okay, and halotype refers to study of the alleles, studying the alleles at two or more neighboring loci, only two or more neighboring loci on one of the two homologous chromosomes. Okay, and remember that people can have similar halotype, by the way, but always have a different genotype. Only identical twins have a same genotype. जहाँ तक बात जीनोटाइप की आती है, तो बेटा पूरा जीनोटाइप तो दो इंडिविजुअल का सेम नहीं हो सकता. सिर्फ आइडेंटिकल मोनोजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं जिनका जीनोटाइप भी सेम होता है, बाकी सबका जीनोटाइप डिफरेंट होता है. जहाँ तक बात है हेलोटाइप की, दैट इज स्टडिंग द फ्यू जीन्स एट द फ्यू लोकाई and not in the all 23 homologous chromosomes. This halotype can be same in two individuals, by the way. And what is phenotype? Expression of the genotype is called phenotype. Whatever written in this genotype, for example tall height, fair skin, and their expression is actually called phenotype. Okay, as simple as possible. After this beta, few more terms and really important. They include three terms in comparison. One is homozygous, one is heterozygous, and one is hemizygous. All three are really important. Homozygous refers to two identical copies of a gene. एक जीन है फर्ज करें बेटा जो कि हाइट के लिए कोड करता है, फॉर हाइट. ओके, फॉर हाइट. और अगर बेटा दोनों जीन सेम है, लेट सपोज कैपिटल ए फॉर टॉल हाइट, और इट कैन बी लाइक स्मॉल ए फॉर शॉर्ट हाइट. ओके, तो बेटा देखें दोनों हाइट के जीन्स हैं और दोनों आइडेंटिकल हैं, लेकिन आप यहाँ पे कंपेयर करें कि दोनों जीन जो है आइडेंटिकल नहीं है. दिस इज़ फॉर लेट सपोज कैपिटल बी इज़ लेट सपोज फॉर टॉल हाइट एंड स्मॉल बी इज़ लेट सपोज फॉर शॉर्ट हाइट. Okay, so two different copies of a gene, right? When both the copies are same, capital A or small a, capital A referring to being tall and small a referring to being short. So both the copies are identical. Okay, but here in this case they two are not identical. One is coding for being tall, one is coding for being short. Okay, so this is going to be obviously homozygous when both the copies are identical,
But when both the copies are not identical, there are two different copies of a gene. Okay, one for tall, one for being short. This is called heterozygous. What about हेमीजाइगस? जब आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल की बात ही नहीं आती, जब सिर्फ कॉपी ही एक मौजूद हो, यू कैन सी ओनली वन जीन इज प्रेजेंट, दिस इज हेमीजाइगस. ओके, और बेटा ये कहाँ देखने को मिलेगा? ज़ाहिर है मेल, ये मोस्टली आपको मेल सेक्स क्रोमोसोम में देखने को मिलेगा, एक्स वाई, जहाँ पे सिर्फ एक्स जो है बेटा जीन को कैरी करता है और वाई जो है जीन को कैरी नहीं करता. फीमेल में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो फीमेल का जो आखिरी सेक्स पेयर होता है क्रोमोसोम का, उसमें जो एक एक्स होता है वो मोस्टली लायोनाइज्ड होता है. लायोनाइज्ड मतलब इनएक्टिव होता है, तो सिर्फ एक एक्स जो है जीन को कैरी करता है. सो इन दिस केस व्हेन ओनली वन copy of the gene is present, this is also hemizygous. Okay, now you understand the difference between three beta. Okay, yeah, right. Now is another term beta, very important, compound heterozygosity. That is our compound heterozygote. This is again a very interesting and very easy term to understand, right? Normally what happens beta, that if let's suppose this is a pair of homologous chromosomes, this is a pair of homologous chromosome. Okay, now let me tell you beta that this is a gene and here on the other locus one gene is present, and if let's suppose this is considered to be normal, this is considered to be normal, let's suppose if I draw the same pair here, just for understanding purpose, if I draw the same pair here, you will now see that if let's suppose one gene is normal and one gene is mutant, one gene is normal with the green color. By the way, normal gene is referred as wild type. जो normal होता है बेटा उसको हम क्या कहते हैं? Wild type allele कहते हैं, wild type allele, the one which is normal. Okay, but here you can see one is mutant. इस कंडीशन को बेटा आप क्या कहते हो? क्या इसको क्या कहते हैं बेटा? हेट्रोजाइगोसिटी कहते हो आप. जब एक वाइल्ड टाइप नॉर्मल अलील हो और एक म्यूटेंट अलील हो, व्हाट डू वी कॉल इट? दिस इज सिंपली कॉल्ड एज हेट्रोजाइगोसिटी. ओके, बट दो डिफरेंट कॉपीज़ है ना जीन्स की, एक नॉर्मल है और एक म्यूटेटेड है. तो देर आर टू डिफरेंट कॉपीज़ ऑफ अ जीन, वन कॉपी इज़ नॉर्मल, वन कॉपी इज़ म्यूटेटेड. So this is simply called heterozygosity. When do you call it compound heterozygosity? बेटा जब दोनों के दोनों म्यूटेटेड हों, और दोनों के दोनों म्यूटेटेड हों तो फिर आप कहेंगे सर इसको हम होमोजाइगस क्यों नहीं कहते? बेटा अगर दोनों के अंदर सेम तरह की म्यूटेशन हो तो उसको हम होमोजाइगस कहते हैं, ठीक है. लेकिन अगर डिफरेंट तरह की म्यूटेशन हो तो उसको होमोजाइगस नहीं, कंपाउंड हेट्रोजाइगोट कहते हैं. मैं मज़ीद इसको एलाबोरेट करता हूँ यहाँ पे. Let's see now. Okay, again, if let's suppose this is a homologous pair of chromosomes, this is homologous pair of chromosomes. Okay, and I will explain two conditions at least. Let me quickly draw it here. There we go. Okay, right. If let's suppose that these two alleles on loci, they two are normal with the green color, these two are normal with green color. Okay, they are wild type alleles, that means they are normal. Okay, if let's suppose one normal allele is present but another copy is mutant with the black color. Okay, or it may be like this copy is mutant and this copy is also mutant. What is this condition by the way called? When one is the normal wild type allele and one is mutant, this is called simple heterozygous. दो कॉपीज़ हैं और दोनों की दोनों जो आइडेंटिकल नहीं है, दोनों डिफरेंट हैं, तो उसको हेट्रोजाइगस कहेंगे. और दोनों कॉपीज़ सेम हैं, दोनों में म्यूटेशन है, तो इसको सिंपल होमोजाइगस कहेंगे. बेटा कोई इसमें किसी को एतराज़, कोई मुश्किल बात? सिंपल, दोनों में म्यूटेशन होमोजाइगस, एक में म्यूटेशन और एक नॉर्मल हेट्रोजाइगस. लेकिन बेटा अगर कुछ यूँ हो जाए कि इसमें एक तरह की म्यूटेशन हो और इसमें कुछ और तरह की म्यूटेशन हो, तो फिर उसको हम कहते हैं कंपाउंड हेट्रोजाइगट, जब दोनों में म्यूटेशंस डिफरेंट हो. तो बेटा मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट डू आई मीन बाय डिफरेंट म्यूटेशन. लेट मी क्विकली टेल यू. या
Here I will explain you what do I mean by different mutation. If let's suppose this is a father with this sequence, this normal sequence A C G T A C. Okay, this is the normal sequence. This is the normal sequence. बट इफ़ लेट सपोज फादर में किसी एक जीन पे म्यूटेशन आ जाए, लेट सपोज सी की जगह ए आ जाए, तो ये एक पॉइंट म्यूटेशन हो गई, ठीक है। और आप देखें मदर में ये नॉर्मल सीक्वेंस है ऊपर वाली, फादर में नॉर्मल थी सीक्वेंस ये नीचे वाली, और मदर में नॉर्मल सीक्वेंस है ऊपर वाली। फादर के अंदर पॉइंट म्यूटेशन आ गई, सी की जगह ए आ गया, साइटोसिन की जगह एडेनिन आ गया, और मदर में क्या हुआ, मदर में भी साइटोसिन की जगह एडेनिन आ गया, बाकी सारी सीक्वेंस सेम है। तो आप एक चीज़ नोट करें कि फादर के अंदर बेटा जो म्यूटेशन हुई है वो इस सेकंड बेस पेयर के लेवल पे हुई है, सेकंड नाइट्रोजनस बेस के लेवल पे हुई है, सी की जगह ए आ गया। लेकिन मदर में ये जो लास्ट नाइट्रोजनस ग्रुप है, लास्ट, उस पे म्यूटेशन आई है। तो जो चिल्ड्रन होगा ही विल बी कंपाउंड हेट्रोजाइगोट। क्यों? इस फादर वाली साइड से जो जीन्स आए हैं उसमें भी म्यूटेशन है, जो मदर साइड से जीन आए हैं उसमें भी म्यूटेशन है। बट वाई डू वी कॉल इट कंपाउंड हेट्रोजाइगोट? हालांकि म्यूटेशन तो दोनों में है, देखें दिस वन एंड दिस वन। बट वाई डू वी कॉल इट कंपाउंड हेट्रोजाइगोट? बिकॉज म्यूटेशन इज़ डिफरेंट, म्यूटेशन इज़ डिफरेंट। यहाँ पे भी देखें पॉइंट म्यूटेशन हुई है, यहाँ पे भी पॉइंट म्यूटेशन हुई है, लेकिन इसकी सीक्वेंस का फ़र्क है, यहाँ पे सेकंड नंबर पे है और यहाँ पे लास्ट नंबर पे। ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड कंपाउंड हेट्रोजाइगोट। डिफरेंट एग्जांपल्स आर देयर, फॉर एग्जांपल फिनाइल केटोनूरिया एंड अदर एग्जांपल्स यू विल सी। ओके, या दिस इज कंपाउंड हेट्रोजाइगोट बेटा। आई होप यू आर क्लियर। इफ यू आर नॉट क्लियर स्टिल देन यू कैन recap this thing again. You can recap this thing beta, this one. Both are normal genes, one normal, one abnormal. This is called heterozygote. And both are abnormal, both are mutant, then it is called only homozygous. But the mutation, if the mutation in both the genes is different, जैसे मैंने आगे एग्जाम्पल दी, एक में पॉइंट म्यूटेशन पैटर्नल साइड पे सेकंड बेस पे हो रही थी और मैटरनल साइड पे लास्ट बेस पे हो रही थी। सो व्हेन द म्यूटेशंस आर डिफरेंट then that is called compound heterozygote. I hope you are clear with this beta. Now comes beta another term after the compound heterozygote, that is pleiotropy, or we call it pleiotropic or pleiotropism. It refers to a single abnormal gene or pair of gene which produces multiple diverse phenotypic effects. मतलब अगर एक जीन हो या पेयर ऑफ जीन हो, इसमें कुछ म्यूटेशन हो जाए और जो इसकी वजह से फिनोटिपिक एक्सप्रेशन प्रोड्यूस हो, जो मसले मसाइल प्रोड्यूस हों वो बहुत ज़्यादा हों, तो उसको प्लीयोट्रॉपी कहते हैं। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल ये है, लेट सपोज आपके VHL जीन में, वॉन हिप्पल लैंडाउ जो जीन होता है उसके अंदर म्यूटेशन हो जाए, तो आप देखें कितनी सारी पैथोलॉजीज अपीयर होती हैं। फॉर एग्जांपल हेमेंजियोब्लास्टोमास ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द रेटिना, हेमेंजियोब्लास्टोमास ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड रेटिना, renal cyst, pancreatic cyst, RCC, that is the renal cell carcinoma, मतलब pheochromocytoma, and the endolymphatic tumors of the inner ear, as well as the tumors of the epididymis in the male, or in the female the tumors of the broad ligament of the uterus. Okay, so now you see there is only one gene or the pair of gene. एक जीन में म्यूटेशन की वजह से जब इतनी सारी फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस आएँ तो उसको हम प्लीयोट्रॉपी कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसकी सिकल सेल एनीमिया भी इसकी एग्जांपल हो सकती है। बेटा फ़र्ज़ करें ये एक जीन म्यूटेंट हो गया, ठीक है, एक जीन म्यूटेशन की वजह से स्प्लीनिक फाइब्रोसिस भी हो गई, इसकी वजह से स्प्लीन इन्फ्राक्ट भी हो गया, या दूसरे ऑर्गन इन्फ्राक्ट हो सकते हैं। उसके अलावा बोनी चेंजेस का आना, और ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर ज़ाहिर है बेटा आपके सिकल सेल एनीमिया के होते हैं, ठीक है ना। सो यू कैन सी देयर इज़ स्प्लीनिक फाइब्रोसिस, infraction of the different organs, there are bony changes. So you can see there are so many different phenotypic expressions. They are seen only due to mutations in the single gene or a pair of gene. Okay, so this is called pleiotropy beta. I hope you are clear with the concepts. If you are not, you can let me know beta.
After the concept of pleiotropy, beta, we have got this genetic heterogeneity. What is this genetic heterogeneity? Let me tell you, this is a very important concept that, okay, um yeah, genetic heterogeneity is like, let's suppose this is a gene, okay, or a pair of gene or more. Genetic heterogeneity is, let's suppose, when there is mutation in all these genes, mutation in all these three genes, but when there is mutation in all these three genes but they produce the same disease. Okay, this is condition number one. When there is mutation in this gene number 1, 2, 3, but they produce the same disease. ओके, दिस इज कंडीशन नंबर वन. या फिर यूं हो कि इन तीनों जीन्स में म्यूटेशन ना हो, सिर्फ एक जीन में म्यूटेशन हो और डिफरेंट तरह की म्यूटेशन हो, और हर तरह की म्यूटेशन के नतीजे में एक ही डिजीज़ होती हो, तो दैट इज़ आल्सो कॉल्ड जेनेटिक हेट्रोजेनिटी. ठीक है. और तीसरी कंडीशन बेटा ये हो सकती है कि किसी एक जीन के अंदर म्यूटेशन हो और उसके बाद जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन हो वो एक नहीं हो, वो डिफरेंट तरह की हो. So that is also genetic heterogeneity. So now let me explain you genetic heterogeneity. It can be allelic heterogeneity. What is allelic heterogeneity? When the different mutations are present in the same gene. Okay, if let's suppose this is a gene, okay, and if there are different mutations present in this gene, mutation number A, B, C, if there are different mutations present in this gene but all the mutations in this gene will lead to the same disease, disease X, whether there is mutation A or mutation B or mutation C, the disease produced will be the same disease. This is called allelic heterogeneity, allelic genetic heterogeneity. Okay, and what about locus heterogeneity? When the different genes or chromosomal locations can be responsible for the same condition. इसका मतलब ये है कि for example this is a gene, this is another gene, this is another gene. अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए तो भी वही डिजीज़ होगी, इसमें म्यूटेशन हो जाए तो भी वही डिजीज़ होगी, इसमें म्यूटेशन हो जाए तो भी वही डिजीज़ होगी. इसको हम लोकस हेट्रोजेनिटी कहते हैं. जब डिफरेंट जीन्स में म्यूटेशन एक ही तरह की कंडीशन कराए. तो बेटा आपको अलीलिक और लोकस हेट्रोजेनिटी का फ़र्क आया समझ में? अलीलिक हेट्रोजेनिटी तब होती है जब एक जीन में जिस भी तरह की म्यूटेशन हो डिजीज़ वही होगी, और लोकस हेट्रोजेनिटी ये होती है कि डिफरेंट जीन्स में कोई भी म्यूटेशन हो अल्टीमेटली डिजीज़ वही होगी. एंड व्हाट अबाउट फिनोटिपिक हेट्रोजेनिटी? What about phenotypic heterogeneity? Phenotypic heterogeneity, that let's suppose this is a gene. If there is mutation in this gene, if there is mutation in this gene but the phenotypic expression is different, okay, if there is mutation in this gene and you come up with different presentation, you may come up with different symptoms, symptom number A, and another person may come up with some different symptoms, another person may come up with some different symptoms. So phenotypy is different. This is called phenotypic genetic heterogeneity. Okay, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता जाऊंगा और आपने मुझे बताना है कि ये किस में फिट होता है, अलीलिक में, लोकस में, या फिनोटिपिक हेट्रोजेनिटी में. अच्छा, लेट्स सपोज जेनेटिक म्यूटेशन अगर हो जाए BRCA1 में, BRCA2 में, PALB2 में, दूसरे जीन्स में. अच्छा, मज़े की बात यह है जब इसमें म्यूटेशन हो, इसमें म्यूटेशन हो या इसमें म्यूटेशन हो, सब के सब क्या कराते हैं? ब्रेस्ट कैंसर कराते हैं. तो ये किस में फिट होता है? अलीलिक हेट्रोजेनिटी है, लोकस जेनेटिक हेट्रोजेनिटी है, या फिनोटिपिक जेनेटिक हेट्रोजेनिटी है? जब डिफरेंट जीन्स में म्यूटेशन एक ही तरह की डिजीज़ कराएं तो इट इज़ लोकस हेट्रोजेनिटी. डिफरेंट जीन्स can be responsible for same condition. This is locus heterogeneity. Different genes responsible for same condition. Okay, this is what type of genetic heterogeneity? Locus heterogeneity. Okay. अच्छा, एक और example. You have to tell me बेटा. You pause the video, you stop the video, and you just think about it and what kind of answer it can be. Yeah. Mutation in the CFTR gene. CFTR gene, mutations in the CFTR gene. There can be different type of mutations in the CFTR gene. Any type of mutations, mutation A, mutation B, mutation C, whatever mutation. But the ultimate result is cystic fibrosis. Ultimate result is cystic fibrosis. एक जीन है, उसमें different mutations हो रही हैं. म्यूटेशन A हुई
तो भी सिस्टिक फाइब्रोसिस हुई, म्यूटेशन बी हुई तो भी सिस्टिक फाइब्रोसिस हुई, CFTR जीन में म्यूटेशन सी हुई तो भी सिस्टिक फाइब्रोसिस हुई। तो ये कौन सी तरह की जेनेटिक हेट्रोजेनिटी है? अलीलिक हेट्रोजेनिटी। अलीलिक हेट्रोजेनिटी क्या होती है बेटा? डिफरेंट म्यूटेशंस इन द सेम जीन कैन कॉज द सेम कंडीशन। You can see different mutations in the same gene causing the same disease. This is allelic heterogeneity. Okay. और बेटा इसके अलावा phenotypic की भी एक एग्जाम्पल यहाँ से लेते हुए चलें। Autism spectrum disorder is the classic example of phenotypic genetic heterogeneity in which what happens, let me tell you, ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है बेटा, एक जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से डिफरेंट फिनोटिपिक एक्सप्रेशन प्रोड्यूस होती हैं। Some people come up with some different symptoms, some people come up with some different symptoms, and some people come up with some other symptoms. So this is the classical example of phenotypic heterogeneity. Okay, multiple variants देखने को मिलते हैं across different genes have been linked to autism, making it genetically heterogeneous condition. So I mean to say autism spectrum disorder is the condition in which people come up with different phenotypic expression. People come up with different phenotypic expression, however they have same genetic mutations. Okay, right? So this autism spectrum disorder fits into this condition. Okay, and another condition is the cardiovascular disorders in which mutations in the different genes, LDLR, PCSK9 and ApoA1, these are the different gene mutations which can lead to cardiovascular diseases. Okay, so there are different genes leading to same condition. Where does it fit? Is it allelic heterogeneity, locus heterogeneity, or phenotypic heterogeneity? Different genes involved and causing the same disease. Do let me know beta. Do mention the answer beta in the comment section. Please let me know so that I can understand if you have got the concepts or not. Okay, so let's go a little ahead and have some other concepts. Yeah, now it's another term, that is penetrance. Okay, what is penetrance in genetics? Beta, penetrance is the probability that a mutant allele or alleles will have any phenotypic expression at all. ये एक जीन है बेटा, इसमें अगर म्यूटेशन होती है तो कितने % चांसेस हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये इसमें जो म्यूटेशन हुई है वो फिनोटिपिकली एक्सप्रेस होगी भी सही या नहीं। तो उस प्रोबेबिलिटी को, उस चांस को हम क्या कहते हैं? पेनिट्रेंस कहते हैं। अब ये दो तरह की पेनिट्रेंस होती है बेटा, मैं बताता हूँ। अब लेट सपोज इस जीन में म्यूटेशन होती है, ठीक है, और 10 लोगों में, इफ़ देर आर 10 पीपल and all of them are developing mutation in a particular gene, if all of them are developing the disease, all developed disease, then that is called complete penetrance. ठीक है, मैं इस बात को थोड़ा और आसान करूँ। इफ़ लेट सपोज हमारे पास 6 लोग थे बेटा, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 लोगों में सेम म्यूटेशन हुई, सेम जीन में हुई, और 6 के 6 लोगों ने फिनोटिपिकली कंडीशन को एक्सप्रेस किया, इसको हम कंप्लीट पेनिट्रेंस कहते हैं। अच्छा, अगर 6 लोगों में बेटा जेनेटिक म्यूटेशन हुई सेम तरह की, लेकिन 6 में से 3 लोग क्लिनिकली प्रेजेंट कर रहे हैं और 3 लोग नहीं कर रहे, तो इसको हम इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस कहते हैं। ठीक है बेटा, आई एंड टू ऑफ माई फ्रेंड्स, we developed same genetic mutation, but fortunately I did not present with that disease, but 2 of my friends developed with the disease. What type of penetrance is this? This is incomplete penetrance because I did not develop the condition, but 2 of my friends did. Okay, you are a group of 5 friends. Out of 5 friends, you all have genetic mutation in the same gene, and all 5 of you presented with that condition. What type of penetrance is that? That is complete penetrance. Okay, right, I hope you are clear with the concept of penetrance beta. Then is the another term, expressivity. Expressivity is the variation in the severity of the disorder. Let me tell you. Okay, here it is better.
Yeah, what is expressivity, beta? If a trait is seen in all the individuals carrying the mutant gene but is expressed differently, तो ये बेटा पेनिट्रेंस से ही कॉन्सेप्ट आगे फॉलो अप होता है. मैं बताऊँ आपको. इफ लेट सपोज देर आर थ्री पीपल, लेट सपोज 1 2 3, and all of three developed the mutation, same gene, and all presented with the same disease. What type of penetrance is this? This is complete penetrance. This is what I told you. This is complete penetrance. अगर कुछ यूँ हो बेटा, तीन लोग हैं, तीन के तीनों में जेनेटिक म्यूटेशन हुई, इसमें भी जेनेटिक म्यूटेशन, इसमें भी जेनेटिक म्यूटेशन, इसमें भी जेनेटिक म्यूटेशन, लेकिन तीन में से दो लोगों ने डिजीज़ को डेवलप किया और तीसरे ने नहीं किया. दिस इज़ इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस. ओके, दिस इज़ व्हाट आई टोल्ड यू. अच्छा, व्हाट इज एक्सप्रेसिविटी? द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सप्रेसिविटी कम्स फ्रॉम दिस कंप्लीट पेनिट्रेंस. बेटा सारे लोग डिजीज़ को एक्सप्रेस करें, लेकिन अगर डिफरेंटली एक्सप्रेस करें, लेट सपोज इसमें बेटा कुछ और तरह की प्रेजेंटेशन हो, इसमें कुछ और तरह की प्रेजेंटेशन हो, इसमें कुछ और तरह की प्रेजेंटेशन हो, तो दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेसिविटी. देखो एक्सप्रेसिविटी क्या है? इफ़ अ ट्रेट इज सीन इन ऑल द इंडिविजुअल्स, सबके अंदर ट्रेट एक्सप्रेस हुआ, सबके अंदर म्यूटेंट जीन था, बट इज एक्सप्रेस्ड डिफरेंटली, दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेसिविटी. फॉर एग्जाम्पल, in case of neurofibromatosis type 1, they range from brownish spots on the skin to multiple skin tumors to skeletal deformities. मतलब तीनों के तीनों ने डिजीज़ को एक्सप्रेस किया लेकिन डिफरेंटली. अब तीनों के तीनों को न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 1 है, इसको भी न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 1 है, इसको भी न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 1 है. तीनों ने एक्सप्रेस किया डिजीज़ को, लेकिन इसमें न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस कैसे प्रेजेंट हो रही है? ही इज़ हैविंग ब्राउनिश स्पॉट्स ऑन हिज स्किन, he is having multiple skin tumors, he is having skeletal deformities. तीनों ने डिजीज़ को एक्सप्रेस किया. he developed neurofibromatosis 1, he developed neurofibromatosis 1, he developed neurofibromatosis 1, but the difference is of what? Phenotypic expression. He developed, what type of phenotypic expression of the neurofibromatosis? He developed brownish spots on the skin, he developed skin tumors, he developed skeletal deformities. Okay, दिस इज़ द एक्सप्रेसिविटी. बेटा अगर ये जो डिफरेंस है फिनोटिपिक एक्सप्रेशन में, वो बहुत अगर कम हो तो उसको नैरो एक्सप्रेसिविटी कहते हैं, और अगर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हो तो उसको वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी कहते हैं. ठीक है, जैसे न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस की एग्जांपल दी मैंने. इस केस में स्किन पे ब्राउनिश स्पॉट्स हो रहे थे, इस केस में बेटा स्किन ट्यूमर्स हो रहे थे. देयर इज़ अ बिग डिफरेंस, सो दिस इज़ वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी. अगर तीन लोग डिजीज़ को डेवलप करें और तीनों में वेरिएशंस हों लेकिन कम हों तो उसको नैरो एक्सप्रेसिविटी कहते हैं. ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद दीज टर्म्स बेटा. नाउ लेट्स गो अ लिटिल अहेड. बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस. नाउ बेटा कोडोमिनेंस is by the way type of inheritance in which two alleles of the same gene are expressed separately. You can see here the codominance. One is the red flower, one is the white, and both are separated, both are expressed separately. You can see the red color as well, you can see the white color as well. कि एक अलील ने दूसरे अलील को और दूसरे अलील ने पहले अलील को बिल्कुल भी सप्रेस नहीं किया. So both the alleles are expressed separately. Okay. And as compared to codominance, there is a term called incomplete dominance. What happens in incomplete dominance? That if let's suppose this is the red flower, this is the white flower, and comes the pink flower, that means that the red color is partially expressed and the white color is also partially expressed. Look, both the alleles are not completely expressed. In case of codominance, both were completely expressed. In case of incomplete dominance, if this is allele R, this is allele white, both are not completely expressed. However, they are partially expressed. This R is partially suppressed by W and W is partially suppressed by R. So the result is pink. Okay, you can read here. Incomplete dominance is a genetic phenomena where two different alleles for a specific trait, that is color, both are expressed. Okay.
and the phenotype is blend of both parental traits. ठीक है, unlike complete dominance where one allele completely masks another, incomplete dominance allows each allele's effect to be partially visible in the phenotype. Complete dominance में क्या होता है बेटा? If let's suppose this is red, this is white, and if the offspring is completely red, this is complete dominance. इस आर ने कंप्लीटली मास्क कर दिया वाइट को, दिस इज कंप्लीट डोमिनेंस. इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है बेटा? जब राइट जो है वो मास्क ना करे वाइट को और वाइट भी मास्क ना करे आर को, और दोनों पार्शली एक्सप्रेस हों और एक डिफरेंट ब्लेंड प्रोड्यूस हो दोनों का, दैट इज पिंक कलर. इन दिस केस this is called incomplete dominance. Okay, so but I hope you are clear with the concepts. I'll continue the same lecture in the part 2 of the video. Thank you so much beta.